आपल्या या अवॉर्ड शो मध्ये आपण न्यू कॅटेगरी इंट्रोड्यूस केलेली आहे. तर त्याचं नाव आहे सोशल मीडिया अवॉर्ड फॉर्मिनिझा. The nominees for the Social Media Soldier Award, Instagram and Facebook are Shilpa Kalshetty, Sangeeta Birajdar, Sammati Marod, Sneha Chawla, Ashwini Gaikwad. गेस करू शकते का इथे? मला हे विचारायचं होतं. एनी गेसेस? अजून? ओके ओके. The Social Media Soldier Award goes to Shilpa Kalshetty. एक मिनिट इकडे बघा मॅडम, इकडे बघा. ओके. Hello, good afternoon everyone. Hello, yes, the all honorable judges on the dais, the most powerful couple of this institute, Swati Shah ma'am and Parag sir, and the most hard-working team, marketing team, and all the beautiful expertise, franchisee teachers, come celebrities of this event and their family. This is Shilpa Rajkumar Kalshetty, and I have been in Shraddha Institute class from 7 to 8 months. So today I got this award, so I'm really speechless. So this is the day. So actually what happens, I think more than 80 to 90% here, all the teachers are somewhere, they are mother, they are daughter-in-law, sister-in-law. So our day starts with something expecting from us. But this is the day we are expecting each every second we are expecting. When we entered in the event, it was like a celebrity. We all are like celebrities today. So this is our day. So I think so when I started my journey in September, so I started with my one daughter. I always thought that I should give some extracurricular activities for her. So I started my abacus with my one daughter. Then now I have 70 to 80 students offline, and I am conducting online for UK, USA, from USA 2 states, and from Bangalore, Karnataka, Maharashtra. So within 7 months I gained a lot of confidence. I can't express in words because just my hands are numb now. So this is the most beautiful moment for me. So मैं कुछ कहना चाहती हूँ. So being a housewife, कहीं ना कहीं हमारे से कुछ ना कुछ expectations रहता ही है. So एक housewife होके और एक institute में एक काम करना means we have to balance both the sides. यहाँ as a mother, as a wife यहाँ भी balance करना रहता है और as a teachers भी balance करना रहता है. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होता ही है. But these kind of programs, I think this is not an event, this is not a teacher annual meet, this is something respect we are getting. So today we are feeling like we are here. So this kind of a programs, this is a one day program, but 100% सबके टीचर्स के मन में कहीं ना कहीं 100% कॉन्फिडेंस गेन हुआ है. I can see the confidence in every teacher's face, a beautiful face, everyone well dressed up. So हम रोज हमारे लिए कुछ नहीं करते. The day starts with कुछ ना कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, in-laws के लिए कुछ करना है, but हम कभी नहीं सोचते कि हमारे लिए भी कुछ करना है. But this is the day सिर्फ हमारे लिए ही बना है. So that the way they are announcing that event, that's really making something more. Because ladies के लिए थोड़ा पुशअप जरूरी रहता है. Yes, we who we are, हम उस देश की नारी है जिस
जिस देश में यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता ये कहलाया जाता है, और उसी देश की नारी है जिस देश में जीजाबाई लक्ष्मी जैसी नारियों की जन्म हो चुका है, और हम उसी देश की नारी है। आज उस देश में आधी आबादी नारी है, और अनफॉर्चुनेटली हम उसी देश की नारी है जिस देश में ये गलतियों के लिए भी 10 हाथ नीचे पीछे खींचने के लिए रहता है। उस 10 हाथ जो पीछे खींचने में रहता है, उस 10 हाथों में अगर ऐसे 2 हाथ स्वाति शाह मैम एंड पराग सर, ऐसे अगर 2 हाथ हमको आगे पुश करने के लिए रहे तो वी कैन डू एनीथिंग। सो टुडे वी कैन सी द हार्ड वर्क, बिकॉज कोई एक प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं होते जब तक उसके पीछे वेल प्लान हार्ड वर्किंग होता है। द वे दे आर कंडक्टिंग द मार्केटिंग सेशंस, the way they are explaining it to teachers, because being a housewife some teachers इतना बिजी होते हैं कि कभी-कभी हम मार्केटिंग सेशन अटेंड नहीं करते, तो स्वाति शाह मैम इंडिविजुअली वीडियो बना के हर एक के मैसेज में डालते हैं कि प्लीज अटेंड करो, आपके लिए है। सो दिस इज द वे दे आर टेकिंग द इंटरेस्ट। आई एम नॉट टेलिंग बिकॉज आई एम द फ्रेंचाइजी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, आई एम genuinely literally speaking from by my heart that they are literally honestly taking a lot of effort to make this institute better. So I am requesting all the teachers, please go socially, so make it more digitally. So we should, the way they are, how they are making effort, same way we have to give them back by making our Shraddha Institute digitally more powerful. So I am requesting all the teachers, so please put your photos, activities and all the students' informations in digital media and make Shraddha Institute globally one of the iconic brand. So I am requesting all the teachers, just make one hip hip hooray Shraddha Institute. Just make it hip hip hooray Shraddha Institute. I'm so thankful to Swati Shah ma'am, Parag sir. This is for both of you and for marketing team, especially marketing team. They are taking lot of effort to make it globally, digitally, still more better. Thank you, ma'am. Thank you.